Meet Amruta, meet Anubha Sagar, the child author from neighboring school, Army Public School. She had written one book and her book was launched at Kendriya Vidyalaya Sadan Command, Pune, during library's class, Journey to Desert. She had shared her experience, how she started writing. Children enjoyed the video screen about Anubha Sagar's interview. She had donated one book to library, The Journey of Desert. Child author from neighboring school, Army Public School, Pune. Children had taken her photograph. She shared her inspired story. Her book was launched during Poet Meet. Her father had given appreciation letter. Towards library and the organization of event. We were lucky we got such opportunity to hear from Anubha. The child author journey was a stepping stone to Nayak Kendriya Vidyalaya Sadan Command, where children were inspired and they started penning down in their own thoughts. Grandfather from primary section, Mr. Vijay Singh Siwaj, retired educationalist from Haryana, from Jhajjar district, and Ranjana Fatehpurkar, a poet from Ranjana Fatehpurkar, a poet from Madhya Pradesh. Child from class 10A, Ujjwal Gaikwad. One more child from class 10A, Ujjwal Gaikwad. Interacting with child authors. It was quite surprising to come out. 4 child authors rise and boarding libraries, Readers Club activity. They shared their journey, how they started reading, how they started writing. This is the Lalit from class 9D. He started his writing short stories.
40 poems in regional language, in Hindi, in Marathi. The way she had presented herself, her imagination came out with her writing collection of poems. Readers Club activities such as author meet, poet meet, success stories from rural areas who has motivated students of Kendriya Vidyalaya We conducted online child author meet and Rising Child Author interacted with students. They shared their life stories, how they started their writing. इथे तिथे हे रूप सावळ्या सदा होते फिरते, दररोज प्रत्येक क्षणी मन माझी उलास धर्माचा रक्षण करणारा करुणारा होते, तुझ्या पुढे तुझ्या विना कुणी काहीच नसते. आयुष्याच्या रथावरील सारखी माझा सूट करते, पडता पडता वाचवणारा तुझ्या विना कोणी. ध्यानी मनी मुक्ती सुटणारे सावळ्या तुझेच नाम, तुम्ही म्हणजे पांडुरंग राम. I mean मराठी. मराठी. ओके, जस्ट एक आध पोएम का पेज दिखा दो डायरी का इनको. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ बेटा, अमृता बोलो. मैम समृद्धि. हाँ समृद्धि बोलो. मैम मुझे अमृता दीदी का ना हैंड राइटिंग देखना है. हाँ, इसीलिए तो मैंने बोला डायरी शेयर करो. अमृता अपना डायरी का पेज शेयर करो. ये तुम भी शेयर कर सकते हो ललित. Yes. Be nice. So she believe in Krishna God. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namah. She had written. Then her profile. Then she had written. Okay. This is about your poems. What you have written. Very nice. So she had maintained index also. I'm happy. Very nice. And each poem with particular image. So you can see it speaks a lot. Okay, art integration is image speaks a lot. Yes, very nice, Amrita. So you could see children. You can see it. Samruddhi, देख पा रहे हो बेटा? यस मैम. See how she has maintained. The three children have. जिन्होंने लैपटॉप से मैंने करनी पड़ी. Yes, no problem. Front You camera can take video and share with me. Very nice, Amrita. अगर मैं वहाँ पे ऐसे देख पा रहा हूँ. Yes, I will get back to you. Once Amrita finished, we will get back to you. Same like Yes, ma'am. that. I will get back to you. Very nice. Very nice. Children, you can see how she has maintained her diary. Means hobbies also you can maintain record very nicely. It is one part of your personality. Very good, very good. She has written so many
Lalit, I would like make post ahead. I made you post, okay? You can go ahead. Last 5 minutes left. Can you see this? You shared the screen, yes. We could see your screen. It's not from here. So you have started writing stories, है ना? This one, 5 from He's a first short story mysteries. writer. Name of my book. Wow, very Would you please nice. like to share something about this book? Ma'am, जिसका काम कर रहे हो? Any title page or anything? yes ma'am. No ma'am, वो अभी तक बनाया नहीं है, मैं बनाऊंगा। Okay. पहले बुक कंप्लीट करूँ। So how many pages you Five have? chapters. How many pages you have completed this? Ma'am, actually ma'am अभी 3.5 stories हो गई है। Okay, very अभी nice. 5th story पूरा ही लिखना है। Actually मैम इधर 5 chapters होंगे स्टोरी में। मैम some of और मेरे को लगा कि मैं सब कुछ डालना है, तो तब फिर मैम तब मेरे को He's a अचानक short से story पीछे से writer. आवाज आई। Lalit मैंने जब from मेरे class फ्रेंड्स 10. को बोला मैम वो ब्रदर्स 2 लोगों को पकड़ लिया है जो कैसे बच Okay. Now let us have one photograph. Meeting may get disconnect anytime. Today is Marathi Rajbhasha Din. So today's program will be conducted in Marathi language. Hello. जब आप मराठी में बोलोगी तब हम भी मराठी में बोलेंगे क्या? Yes, yes. आज का दिन मराठी डे है, तो आपको मराठी पे बात करनी है. ठीक है मैम, ठीक है? हमें करो। Okay. It was posted in your class group. Today's author meet लेखक, कवि और मैजिशियन, आज उनसे मिलेंगे हम, ठीक है? आज लाइब्रेरी के क्लास में ऑथर मीट, कवि से भेंट और मैजिशियन का मैजिक शो होगा। तो ऑन let us welcome our chief guest, today's guest of the honor, मोहम्मद शकील सर। सारे बच्चे एक साथ बात करें, चलो। सुमध्यान सर। Thank you children. Okay, today's program will be मराठी भाषा गौरव दिन, राजभाषा मराठी। ओके, तो केंद्रीय विद्यालय दक्षिण कमान ग्रंथालय आपलं स्वागत करत आहे। आजचा ऑनलाईन क्लास 6 6वीचा अ ब क ड क्लास। ओके, तर कोणता पण प्रोग्राम असेल तर त्या प्रोग्रामची सुरुवात कशाने होते सांगा बरे? लॅम्प लाइटिंग। व्हेरी गुड। तर दिवसाची सुरुवात होते सूर्याच्या केशरी किरणाने आणि कार्यक्रमाची सुरुवात होते दीप प्रज्वलनाने। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। जैसे कि आज मराठी दिन है, तो मराठी राजभाषा दिन क्यों मनाया जाता है? ये मराठी राजभाषा दिन मनाने के पीछे क्या रीजन है आपको पता है? वाहते रक्तात माझ्या मराठी, गर्वाने सांगतो आहे मी मराठी, संस्कृती माझी मायती मराठी, अभिमानाची ती माय मराठी। ज्ञानदेवांनी रुजविली ती भाषा मराठी, शिवरायांनी टिकविली ती संस्कृती मराठी, संतांनी वाढविला तो वाण मराठी, आमची मायबोली आमचा अभिमान मराठी। मराठी आमुच्या उरावर
मराठी आमच्या नसा नसात नाचते मराठी बोलतो मराठी ऐकतो मराठी जाणतो मराठी मानतो मराठी येथल्या नभामधून वर्षते मराठी येथल्या पिकामधून डोलते मराठी आजचा प्रोग्राम मराठी का ठेवला गेला आहे का तर मराठी भाषेचा विसर होत चाललाय. इंग्रजी भाषे आणि हिंदी भाषेचं प्रभुत्व आपल्यावर आलंय का तर आपण केंद्रीय विद्यालयामध्ये शिकतो आहोत. तर आपल्याला दोन भाषा इंग्रजी आणि मराठी इंग्रजी आणि हिंदी हे दोन आपल्या अभ्यासात असल्यामुळे आपल्या मातृभाषेचा विसर पडत चाललाय. तो विसर पडू नये ह्यासाठी आज आपण मराठी राजभाषा दिन साजरा करतोय. तर चला मराठीत बोलूया, मराठीत वाचूया, मराठीत लिहूया आणि मराठीत भांडूया, मराठी टिकू. तो आज मराठी दिवसाच्या सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा. आज मराठी राजभाषेचं जसं आपण सांगितलं की मराठी भाषेला आपल्या साहित्याने समृद्ध करणार कविवर्य कुसुमाग्रज यांची जयंती आहे. तर यांच्या जयंती दिनी विनम्र अभिवादन आणि सर्वांना मराठी भाषा गौरव दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. कुसुमाग्रज यांचा जन्म दिवस मराठी भाषा दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो. तो कोणता दिवस आहे? 27 फेब्रुवारी. 27 फेब्रुवारी पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मराठी दिवस म्हणून साजरा केला जातोय. अतिथी आहेत लेखक, कवी, मॅजिशियन, जादूगार मोहम्मद शकील, ताज मोहम्मद जाफरी यांचं स्वागत आहे. वाहते रक्तात माझ्या मराठी, गर्वाने सांगते आहे मी मराठी. संस्कृती माझी माय मराठी, अभिमानाची ती माय मराठी. हा नमस्कार. हा नमस्कार. फरक आहे मराठीचा, एक जन्म देते तर दुसरी कुशीत घेते. अशा या माती आणि मातेच्या पवित्र स्मृतीस अभिवादन करून आजच्या या विशेष अशा सोहळ्यात उपस्थितांचं मी सहर्ष स्वागत करते. स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम. शकील सर जी नमस्ते जी कहिए. नमस्ते सर. राजमाता जिजाऊ आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं पवित्र स्मृतीस अभिवादन करून आपण सुरुवात करूया. आजचा दिवस मराठी भाषा दिवस आहे, राजभाषा दिवस आहे, मराठी दिवस. आपण सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. मी मोहम्मद शकील, ताज मोहम्मद जाफरी, मंचर, पुणे. एक बहुभाषिक कवी म्हणून हिंदी, मराठी, उर्दू, तेलुगू चारही भाषेत लिहितो आणि जादूच्या प्रयोगांच्या माध्यमातून अंधश्रद्धा निर्मूलन असेल, एड्स जनजागृती असेल, राष्ट्रीय एकात्मता असेल, भाषावाद, धर्मांधाच्या विरोधात मी काम करत असतो. वीडियो नहीं दिख रहा.
अधूरी शाम का अधूरा किस्सा हूं मैं, जो पढ़ा न गया किताब का वो हिस्सा हूं मैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज अंकिता चौधरी ऑफ 10C फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय सदर्न कमांड। तो जैसा कि हमारे देश की परंपरा है, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हमेशा
हमेशा ईश्वर के नाम के साथ होती है. So before we begin, we always light the auspicious lamp. May I invite Sucheta ma'am to kindly light the digital auspicious lamp. Choreography done with the help of Tanmay Haldia, KBS, Kolkata region alumna, who work as a counselor at KV Subham Kamal, now working at Lexington, and he keeps supporting, he keeps helping. Assignment is a folk dance during KBS Foundation Day. We got Assam State and we had done the folk song on Pindare Polishar. After getting crops ready, all those farmers are celebrating.
लगता इगुरे ढोल घट फकट लगती इगुरे ढोल घट फकट बोतल पीरी ढोल फुटे बोतल पीरी ढोल फुटे नमस्कार, मैं पृथ्वीराज उपाध्याय। मैं कक्षा 10वीं से हूँ। तो लाइब्रेरी मैम मिली तो मैं जब गाना गाया तब से लाइब्रेरी मैम को मुझे पसंद आया। उसके बाद उनकी मदद से या फिर कुछ भी उनका बोलने से उनके वजह से मुझे हेल्प मिलता है और मेरे स्टेज पे मुझे गाने की मौका मिलती है। और फिर मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर पाता हूँ। मैं गाना गाया था और मैं गाना गाता हूँ। और अब मार्क्स कैसे आते हैं आपके? मार्क्स कैसे आते हैं? आपके वजह से अच्छे आते हैं क्या? वेरी गुड। सुप्रभात, मेरा नाम पृथ्वीराज उपाध्याय है। मैं कक्षा 10वीं से हूँ। आज मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ जो कुछ इस प्रकार है। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने राह पर चलना। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने राह पर चलना। कपट कर्म चोरी बेमानी और हिंसा से हमको बचाना। कपट कर्म चोरी बेमानी और हिंसा से हमको बचाना। नाले का बन जाऊं न पानी, नाले का बन जाऊं न पानी, निर्मल गंगा जल ही बनाना। अपनी निगाह में हमें रखना, सीखे हमने एक राह पर चलना। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने एक राह पर चलना। क्षमावान कोई तुझसे नहीं की और मुझसे नहीं कोई अपराधी। क्षमावान कोई तुझसे नहीं और मुझसे नहीं कोई अपराधी। पुण्य की नगरी पुण्य की नगरी मैंने पापों की बांधी बनाना हो।
करुणा की छाँव में हमें रखना, सीखे हमने एक राह पर चलना, तेरी पनाह में हमें रखना। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, very good. Yes, ma'am. Good morning to everyone. So today I would like to invite you to introduce one of the author Raijan from KV Southern Command. So meet Master Milind. He is studying in engineering first year at JSPM and he has started his journey as an author. So let us have short interview with Milind. So Milind, share your story. Hi guys, my name is Milind. I'm from 2021 batch. Recently I am pursuing BTech in IT in JSPM RSUE. I came here in 9th standard and 9th to 12th was my journey. Recently I am writing a book. The topic is flaws in our Indian system, and yes, the journey starts from here. And the pandemic also. In pandemic, so much of free time was there. You all know that. So in that time, I just saw in India there are so many problems that should be solved. Government problem, political issues, medical issues, sports issues, educational issues. So on those topics, I just wrote something and give my solutions on that. So we can use these types of resources, we can use these ideas so that these problems can be solved in this way. So it is my imagination about those topics. So yes, my book is half done and it will be ending till January 2022. The role of my teacher, yes, ma'am was very, very, very big, because in free time I used to come here in arrangement periods. I used to come here. Ma'am was so supporting. So yes, ma'am's nature is very helping. She encouraged me to write books, and yes, and I would like to know the role of library activities. Did you participate in any activity? Yes, story writings were there, the literature was there, and yes, sometimes we used to read magazines and made some short summaries from there. Very yes, library activities are very well there, and I used to miss them. These activities are missed in colleges, because in college the academics is very strict. So there are all academic books. There is no fiction, there is no literature, and there is a big study room. So the facilities are very less outside the school. So yes, I'm missing it very much. Thank you. Thank you. Good morning to everyone. Good morning. In today's substitute period, today I am going to introduce one of the authors who writes it from KV Southern Command. So let us meet Milind. He is student of KV Southern Command. KV alumni is visiting KVSC library as they are connected through literary work. He has started his journey as an author, and half of his book is complete. So I would like to invite him as a child author from KV Southern Command, and I would like to request him to narrate his journey as an author. So he will guide you how to start your journey as an author or poet, how to express your feeling by penning down. Okay? So let us know his thoughts on writing book. Over to Milind. Yes, I'll just. Yes. Introduce yourself, tell your journey, how you started your writing, what is your present status, and what are your goals. Okay, so my name is Milind. I am a 2021 batch student, and recently I am pursuing BTech in IT in JSPM RSUE, which is an autonomous college in Pune. And yeah, I am last year I was in 12th, then gone to college. This library is the best place you can find in a school. Beside your science labs, chemistry lab, physics lab, and also computer lab. Because in library you can cast your imaginations, you can pen down your imaginations, your thinkings, everything you want. Beside grammar, just leave grammar. Okay, who one is कौन interested है? Book writing, story writing, और शायरी and all. कोई करता है यहाँ पे? Almost we have 4 authors in this class.
great, great. So is there any language barrier, or you are like Marathi, Hindi, English, or you are just focusing on English or just English? So it's not important कि आप इंग्लिश में ही लिखो, कुछ भी हो इंग्लिश में लिखो, ऐसा नहीं. आपको जो फील होता है, anything, just forget about grammar because you are just started writing it, right? So पहले उन चीज़ों को पेन डाउन करो अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में. You can take help of मैम कि मैम इधर ग्रामर अटक रहा है तो प्लीज जस्ट गाइड मी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ और ऐसे लिख सकती हूँ. बिकॉज अगर तुम अपने लैंग्वेज में उस चीज़ को एक्सप्रेस करोगे, सो द रीडर विल फील इट. बिकॉज इफ यू आर रीडिंग समथिंग, इफ यू कांट फील इट, देयर इज द रीडिंग इज टोटल वेस्ट. बिकॉज कुछ अगर तुम लोग पढ़ रहे हो लाइक अ स्टोरी और ए फिक्शन और ए नोवेल, सो अगर तुम लोग उस चीज़ को फील ही नहीं करोगे तो पढ़ने का फायदा क्या है? ओके, यू आर गेटिंग इट.